साडे ENT ਦੇ ਮੇਨ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਇਅਰਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ PGI ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਹੈਡ। ਦੂਜੀ ਹਜੇ ਸਰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ Fortis ENT डिपार्टमेंट मोहाली ਦਾ यूनिट ਤੇ मेन हेड एंड नेक सेंटर ऑफ Fortis in Mohali। So we all request you to listen to sir because we've come all the way from Chandigarh or Mohali just for the press conference. Sashikar and thank you. Very good evening. First of all, apologies. We were delayed inside the Bathinda. We got delayed by about 10-15 minutes. Somebody guided us a wrong way, so we kept on moving round and round. I'm very sorry for that. We started at 9 o'clock from the gate and non-stop we came, but got late here. The basic purpose of today's press conference is twofold. पहला एम हैगा कि असी पंजाब को डेफनेस फ्री डिक्लेयर करिए। This is my consecutive 4th press conference in different part of Punjab और ये मुहिम हमने फॉर्मली लिया है कि हम इंडिया को डेफनेस फ्री बनाएं और पंजाब के अंदर एज ए टोल्ड इट इज द 4th press conference and the idea is that we make Punjab deafness free and I request all of you that a single person अगर मैं चाहूँ कि मैं कल्ला इस मुहिम को पूरी कर सकना and wrong somewhere I want everybody particularly the strongest force pillar that is the media to join us. This we are doing free of cost because after serving about 35 years the aim was कि हम कुछ रीपे कर पाए जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया टू रीपे हम उन चीजों को अपने जहन में रखें और उन बच्चों का ख्याल रखें जो कि अभी पैदा हुए हैं या होने वाले हैं जिनको हम डेफनेस फ्री एरिया में ला सकते हैं। दूसरा ये मेरा टू अर्ली डिटेक्ट कैंसर दी अर्ली डिटेक्शन एंड जे कैंसर को असी बहुत जल्दी डायग्नोज कर लेंगे तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। I show you a few pics. I have a press note. I think it has been circulated, but I'll tell you something more about this. So welcome you all to this press conference. The science is developing every day, and one of the main things is the presence of this equipment, जिस पे डायमेंशन लिखा हुआ है. This is the robotic system, जिसका मेन एम है कैंसर में अर्ली ट्रीटमेंट है। अगर हम इन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो एक तो मॉर्बिडिटी बहुत कम हो जाती है और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कुछ कैंसर्स जो हम कहते थे इनऑपरेबल है कि घर जाओ सेवा करो, उन कैंसर्स में भी हम टेक्निकली यूजिंग दिस इक्विपमेंट वी कैन डू सर्जरीज। In the world, this is the only company which has come out with a robot for the last, I was trained somewhere in 2012-13 in America, and till that, 12 days, 12 years, 13 years, no other company is in competition because this is the only company who manufactured the medical robots. This is something from working as a director in Fortis after my initial service is all in PGI Chandigarh for more than 3 decades, and after working for 3 decades, I joined as a director in Fortis Mohali where I'm working. If you see on these things, here जो हम देख रहे हैं, ये सब advanced cancer है। जब patient इस stage पे आता है, बहुत दुख होता है कि इस stage पे ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ लाइन कह सकते हैं कि वो stage है कि जब तुसी यदि सेवा करो और कुछ नहीं हो सकता। But I tell you something. This is something a graphic representation only head and neck. गले head and neck के अंदर ये इतना कॉमन कैंसर है एंड बड़ा दुख की बात है कि हेड एंड नेक वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कैंसर है। सो इतना इंसिडेंस है और वो कैंसर जिन्हों असी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिन्हों असी प्रिवेंट कर सकते हैं, still patient comes in what I showed you in stage 4 when we say nothing much can be given at this stage. सबसे इम्पोर्टेंट है
कि वी शुड नो कि कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो आज मेरी रिक्वेस्ट है सारी मीडिया में आई ऑलवेज गो टू द टीचर्स टू रिक्वेस्ट चिल्ड्रन कि गो टू योर पेरेंट्स इफ योर फादर इज स्मोकिंग. सो टोबैको chewing, tobacco or cigarette smoking, there are certain non-tobacco smoking, e-cigarettes, which is bad in the country, but still you see, go to the airports, you see a lot of smoking chambers that have e-cigarettes used. E-cigarette, when you use, compared to the conventional cigarette, the chances of cancer are two-folds. अगर 100 से 10 में होना है तो समझ लो e-cigarette तो 27.8%. So that's the difference, but still people are using. I want to emphasize on alcohol, particularly alcohol and tobacco, cigarette and tobacco. Both are carcinogenic. किंतु जे tobacco and alcohol में combine करते हैं, so the effect, the cancerous effect increases 3 times. मतलब अगर एक बच्चे या एक अडल्ट में कैंसर होना है, people who are smoking will have 33% cancer. And the worst part in smoking is, suppose in this chamber 2 people are smoking, we all are at risk. This is called a passive smoking. And passive smoking का जो कैंसर का incidence है वो 17.25, which is again a very high and alarming. So these are the factors जो हम रोक सकते हैं, सिगरेट को बंद कर सकते हैं. अभी दिवाली पे हमने चंडीगढ़ के 11 स्कूल्स को हमने कवर किया था इसी में. Where we trained the very small kids, the nursery, KG and first, and we visited 8 schools. और उन स्कूल के बच्चों ने घर जाके एक इशू बनाया कि no crackers. And that was something very alarming and we were very satisfied. At least मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत कम हो गया, पर अगर 10% भी noise pollution कम हुआ है, it is a credit to those children, not to us. And we want to train those students, those children who can really fight with the parents कि नहीं घर पे सिगरेट नहीं पी जाएगी. Pregnant lady है, हमारी lady should come out कि no smoking at home. क्योंकि she is having a child in her womb. Because passive smoking से उस बच्चे पे जो भी पैदा नहीं हुआ उस पे भी उतना ही इफेक्ट होगा जितना एक अडल्ट पैसिव स्मोकिंग से होता है. Pollution, yes, it is coming up in a very bad way. Though we have let all rules laid down कि हमें pollution नहीं होना चाहिए, the vehicle smoke, but in spite of anything and everything, we have a lot of pollution. HIV is the last which is coming up. Now all classification in the world in 2017, I was one of the member in the Cancer Control Committee. We had changed with HIV. HIV is type of a virus, and जिन cancers में HIV positive होते हैं, वो aggressive cancer होते हैं, किंतु अगर timely intervention होता है, तो treatment ज़्यादा safe होता है compared to non-HIV cancers. And I'll talk about the genetic part. Now, when you have, this side of a picture, when we say, sorry, it's too late, but कोई भी जख्म जिसको हम अल्सर कहते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर, जो जख्म जो हील नहीं हो रहा, मीन्स कि इट कैन बी अ कैंसर. और ये सब कैंसर्स, ये तल का ये इसी तरीके से स्टार्ट होते हैं. एक छोटा सा घाव हुआ, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, बढ़ता चला गया, थोड़ी देर में गांठ हो गई. सो कोई नॉन हीलिंग अल्सर जख्म कैंसर हो सकता है. गर्दन हेड एंड नेक में कोई गांठ का होना, which is painless, slow growing, they can be query cancer. Then anybody says कि मुझे खाना निगलने में प्रॉब्लम है, difficulty in swallowing, this means upper esophagus can have lesions. So सबसे important simple change of words, जो laryngeal cancers हैं out of head, they count for about 33%. अगर change of voice है, हाथ दवाई से ठीक नहीं हो रही, प्लीज कंसल्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर. सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होती हैं, फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंचना चाहते या हम उस चीज को हाइड करते, which leads to aggressive cancer.
जब मैंने रोबोटिक की बात शुरू की, आई स्टार्टेड आई टोल्ड यू अबाउट 13-14 years back. It is a minimally invasive कि जहाँ पे कम सर्जिकल इंटरवेंशन, छोटा कट लगा के हम ज्यादा बड़ा ट्यूमर निकाल सकते हैं. Particularly those areas. Suppose somebody has a cancer growth out here, so either I cut all face या दूसरा तरीका है, robot has long arms I showed in one of the pics. So I can go from oral cavity into the area which has a cancer and we can remove and block cancer. And इसलिए हम कहते हैं it is really changing paradigm कि जो patients ऑपरेट नहीं हो सकते थे वो भी ऑपरेट हो सकते हैं. रोबोटिक्स दिस टाइप ऑफ आर्म, अगर आप ये देखते हो ये 14 इंच तक एक्सपैंड हो जाते हैं. And see the thickness of the arm. It is less than my finger's thickness, and I can put from the oral cavity, from the nose, and I can reach the side of lesion. ये हमारा एक सेटअप होता है जो ऊटी सेटअप है, जिसके अंदर ये कंसोल है. So when I am operating, I may not touch the patient at all. मेरे पास सब कंट्रोल इस ब्लॉक में है. और जैसे हम रोबोट अक्सर जो हमारा कंसेप्ट है कि सिक्योरिटी में लगाया तो वहां पे एक शेडो आई, रोबोट पिक्स अप दैट शेडो एंड हिट्स. सो दे आर ऑल एक्टिव रोबोट्स. What we have in a medical practice is inactive robots. Means they don't have a memory. They are to be governed by your 2 hands, 2 feet. So we can have 2 consoles where I can train my juniors that I can make the junior operate from one of the consoles. I have the main controls, and it takes 15 सेकेंड. अगर कहीं मुझे लगे गलत जा रहा है जो मेरा स्टूडेंट है, 15 सेकेंड में I can take over everything and have the controls with me. इस कंट्रोल में ये एक आई पीस है जहां से you can see what is happening with the patient. ये जो 2 ब्लू और ये येलो स्विचेस हैं और ये 2 स्विच है और एक ब्लैक स्विच साइड पर है. सो आई कैन कंट्रोल विथ माय 2 feet दिस 5 कंट्रोल्स. सो 5 चीजें एक दोनों टांगों से और 2 these 5 I can control, and with the arms I have joysticks like this, and I have 2 joysticks where I can control my instruments. So हमारे पास rather than 2 हाथ की जगह 7 हाथ बन जाते हैं, 2 टांगों से और 2 हाथों से, जहाँ पे हम एक सर्जरी को कंट्रोल कर सकते हैं. And this is finally what all controls will be there on the console. अब हम जब इतनी बड़ी रोबोटिक की बात कर रहे हैं, 2 चीजें. 1, we have seen the transition पिछले 13 साल में, और मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% और सर्जरीज रोबोटिकली हो जाएंगी. रोबोटिक में हमें 3D पिक्चर मिल जाती है. हमें 3D का मतलब है परसेप्शन ऑफ डेप्थ, और परसेप्शन ऑफ डेप्थ से हम प्रिसीजन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. हम पेशेंट कार्ड से बहुत दूर बैठे हुए हैं और हमारे साथ ऑल कंट्रोल्स आते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज now these are the arms which are going into the patient, which I am controlling from away. I can have 10 feet distance, there is no problem. Now we have multiple monitors everywhere. My staff nurse can see what I am doing because she is there on bedside. My assistant surgeon is on bedside. और मैं जो कंट्रोल कर रहा हूँ फ्रॉम अ डिस्टेंस, आई एम माई डिफरेंट मॉनिटर. सो पूरे रूम में इस टाइप की 4 बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं ताकि एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन द सर्जरी. तो अगर हम 20th सेंचुरी से आज तक लेके चले कि क्या हुआ, हमें ये देखते हैं कि जब 70-80 का टाइम था, मतलब दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस and maybe some started post graduation. So this sort of a surgery we used to do. We'll cut everything, open it, and then do. And that was the only scope कि बड़ा incision और precision of cancer. 90s में आते आते क्या हुआ कि lasers were introduced in head and neck. So concept बना कि जितना organ बच सकते हैं वो बचा लो. Like suppose I am operating in a voice box. I prefer at least 1 कॉर्ड बच जाए
और दूसरी कॉर्ड से पेशेंट का भी काम चलता है. So that's a conservative surgery which is called an organ preservation surgery. And the main thing was that we had chemo and radiation which came in 90s in a big swing, and then came the lasers in 21. Laser अभी भी in practice है, पर gradually with the war lasers कम होते चले गए और lasers was taken over by, what is a laser? Laser is a hot knife by population where we work at -70 degrees centigrade. So फायदा क्या हुआ लेजर से कि प्रिसीजन उतनी ही रही किंतु पेन आफ्टर द सर्जरी कम होती चली गई. एंड सिंपल व्हेन वी टॉक ओवरऑल, चाहे हमने यहाँ से किया वहां से किया, लेजर किया, ऑपरेशन किया या रिकॉर्ड किया, कि जो जैसे सपोज लेट्स से दिस इज अ पार्ट ऑफ कैंसर वी दैट वी हैव टू गिव अ गुड रिसेक्शन मार्जिन कि कैंसर के एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर नॉर्मल टिश्यू निकाल दिया, ताकि आई एम वेरी श्योर कि एंड ब्लॉक कैंसर एडमिट, which is only possible using the robotic system. So these were the cancers. You see, these are the base of lung cancers. जहाँ हम कहते थे कि 5-year cure rate is 20%. Now with the invent of, now we have this as robotic arm, so we can reach that depth. Means अपने front teeth से approximately मान के चलो 2-2.5 फुट तक हम नीचे जाके we can operate. We can find the area of cancer and resect that area. And can you please listen to me? Excuse me. Gradually, please now. Gradually we can see that is the area where there was a cancer, and we can remove all cancers, giving a total resection free. Now what is the advantage when I am using a robot? Number one, my hospital admission is very less. I will be discharging this patient maybe on day 1 or day 2, maximum day 2. Whereas I go for a conventional surgery, I keep the patient for minimum 3 weeks. So 3 हफ्ते versus 2 दिन. So this is an advantage. कुछ थे जहाँ पे सर्जरी नहीं हो सकती थी, वहाँ ऐसे we can operate. Now this is the monitor which we see, and same patient where I am cutting the videos. Now एक सर्जरी होती थी जो बड़ी कॉमन थी, दैट वाज कॉल्ड कमांडो सर्जरी. कमांडो सर्जरी का मतलब होता था कि जैसे कमांडो एक्शन होता है कि देयर इज अ कैंसर इन द अपर पार्ट ऑफ नेक, तो ये वाली हड्डी बाहर की स्किन टॉन्सिल तक हम एंड ब्लॉक एज अ कमांडो रिएक्शन को पूरा का पूरा एंड ब्लॉक निकालते. नाउ इमेजिन द मॉर्बिडिटी, पेशेंट विल नॉट हैव अ ट्यूब थ्रू द लाइफ, उसको यहाँ से ट्यूब ले लेगी सांस लेने के लिए. But question was, can we cure them? But with recent advances, particularly the robots, we can have a normal quality of life because we are not touching skin. We preserve that bone. So to conclude, when we talk about cancer, particularly when I talk in Punjab, very unfortunate story. Yesterday we operated one child. I can't have the details. Stage 4 cancer. And the age was 12 years, 11-12 years. See the transition. हम जब हम MS कर रहे थे, हम मान के चलते थे 3rd decade, 4th decade, 6th decade कि ये कैंसर के 60 साल से ऊपर हो गए. पर 12 साल का बच्चा we operated yesterday and stage 4 cancer. Early detection is one, पर जब तक हम सब उस pollution को, उस adulterated food को, passive smoking को particularly by the parents नहीं रोकेंगे तो वो कैंसर नहीं रोकेगा. The second name was what I started from. We want to declare Punjab as deafness free, and the problem is if you go to the WHO data, we say 2 to 3 per 1,000 normal children who are born are having a hearing loss. And fortunately or unfortunately, आज हमारी country is at number 3 in the world when we talk about hearing losses, and we presume that we have approximately 3 million people who are deaf. And most unfortunate is there is a curable deafness. That if you diagnose
we can cure these problems and we can give the child a normal life. So one is, one was the cochlear implantation. The cochlear implantation is a small device. It's an electronic device. If you really ask me, it is giving two senses. So सबसे बड़ी research अगर late 90s में हुई है, that was the development of cochlear implant. So this device हम surgically cochlear में डाल देते हैं. It has three components. One is a fixed, which we say the companies claim to have the life of around 100 years. Means one time. We have an external device जो as a speaker काम करेगा और child can go to normal school, and that's the best part if you do an implant in a small child. Problem क्या आती है when we talk about implant? Parents, the teachers, the society, हम लेफ्ट चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, चलने दो. Whereas blindness पे उतना काम चाहे नहीं हो सका, particularly when we talk about the devices which can revert the optic nerve into a normal nerve, where we are doing an auditory nerve. उसके अंदर we are more conservative than anything. और 7-8 साल की उम्र के बाद 7-8 साल की उम्र के बाद हमारा ब्रेन स्पास्टिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस which is sent by electronic vibration does not reach our brain. So अगर हमने वो 8-10 साल की एज निकाल दी, then you are deaf or throughout the life. So an early intervention, please join hands with me, and we should spread this to everybody that there is a remedy till the age of 10 years, but we always aim reason being 1-2 साल और भी बच्चे निकाल देते हैं. And if you have that sort of implant, the child will go to a normal school, will have a normal implant. All implantings. So with this, thank you very much to be with me today, and I really welcome any questions which anybody wants to ask.